लेट मी एक्सप्लेन दिस रियल क्विक। वीडियो का टाइटल देख के तो आप लोगों को समझ गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो घर आप लोग ने अभी अभी देखा वो डैड ने अराउंड 3.5 साल पहले 4 साल पहले खरीदा था। एंड दैट वाज द टाइम ये बिल्डिंग सिर्फ बन रहा था, बिकॉज यहाँ पे बिल्डिंग का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे चॉल्स एंड बंगलोज टाइप ही है और बिल्डिंग सिस्टम केरला में बहुत बाद में आया है। सो माई फादर डिसाइडेड टू बाय अ फ्लैट हियर इस बिल्डिंग में, सेकंड फ्लोर में, विच इज़ द लास्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, सेकंड फ्लोर। इट्स अ 2 bedroom हॉल किचन। इट्स क्वाइट स्पेशियस हियर, काफ़ी बड़ा घर है कंपेयर टू अदर 2 bedroom हॉल किचन दैट आई हैव सीन एनीवेयर, लाइक मुंबई या कहीं और देखो। दिस इज़ कंपेरेटिवली बिगर देन ऑल ऑफ दोस। स्क्वायर फीट वगैरह मुझे पता नहीं, तो जो भी है इट इज़ बिगर इज़ ऑल आई कैन से। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 साल पहले जब ये घर लिया था और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये घर देखा था, तभी आई विल से मैक्स 35% ऑफ द वर्क वॉज डन। पेंटिंग बाकी था, इंटीरियर्स बाकी था, बाकी सब कुछ बाकी था। मतलब बेसिकली सीमेंट का बिल्डिंग बना के रखा था, वैसा लग रहा था। बट अब इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है एंड दिस हाउस इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। प्रॉपर पालक्काड टाउन जो है वहाँ से अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स दूर है ये लोकेशन जो आप लोग देख रहे हो। केरला में ऑब्वियसली पीपल टॉक मलयालम इज़ देयर मदर टंग, बट ग्रामम में पीपल टॉक तमिल। सो बेसिकली अयर्स एंड ब्राह्मण्स, बेसिकली ऐसे जो गाँव होते हैं, ऐसे जो ग्रामम वगैरह होते हैं, वहाँ पे ब्राह्मण्स रहते हैं। सो दे आर नॉट प्रॉपर केरलाइट्स, दे आर साउथ इंडियंस, बट दे आर तमिलियंस who reside in Kerala. I hope that works well when it comes to explaining. That was just short and simple room tour for you guys. I'm not making this a content, लेकिन ये मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, so I just thought of sharing it with you guys. I hope you don't mind. नेक्स्ट किधर नेक्स्ट किधर टाउन हॉल। दो सौ साल पुराना बिल्डिंग है। केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। यहाँ टिप्पू सुल्तान भी आके गया है। टिप्पू सुल्तान आके गया है, हम लोगों को किसी ने बोला हो पे टिप्पू सुल्तान आके गया है। 200 years old बिल्डिंग। And we are back home. So like I said earlier, whatever you just saw is a part of my life. It's my house and I was not being selfish of having a content, कि मैं मेरे घर का वीडियो को content बना के डाल दूँगा, ऐसा कुछ नहीं था. This is a part of my life. This place is a part of my life. That house is a part of my life. Obviously 3-4 साल हो चुका है, but मैं second time देख रहा हूँ. हाउस वार्मिंग के लिए मैं नहीं था, गृह प्रवेश जो बोलते हैं, हाउस वार्मिंग के लिए मैं नहीं था. And all of that, so it was very special to me, so I just thought of sharing it with you guys. I hope you liked this video. I'm kind of done with my trip to Kerala, exploring Kerala. I know 100% exploring हुआ नहीं है, काफ़ी कुछ बाकी है. And things did not happen the way it was planned. I have plans of coming back to Kerala very soon. So I'm visiting one more place in Kerala, and that place is very, 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 very close to my heart. और उसके बाद I'll be flying back to Mumbai. Flying back, बाइक यहीं पे है, मैं फ्लाई करके क्यों जा रहा हूँ, ये सब मैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ. And one more video to go. So yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching.